Okay, chaliye. So, welcome back to the next lesson. I mean, the lesson which we were studying from last 3 days. आज का जो सेशन है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है. देखो, इंडिया में ना इतनी सारी लैंग्वेजेस बोली जाती है. सब एक दूसरे की लैंग्वेज बोलना सीख जाते हैं. लेकिन जब इंग्लिश की बारी आती है ना, तो मतलब सबके स्क्रू जो है ना वो ढीले हो जाते हैं. क्योंकि इसके रीजन भी है, क्योंकि हमारी मदर टंग नहीं है वो. और मदर टंग के जैसे आप मिलती जुलती भाषा सीख रहे हो, पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, वो आपके बोलने में बड़ी जल्दी आ जाती है. ना हमारे पास प्लानिंग होती है, ना एनवायरनमेंट होता है, ना इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस होती है. तो ऐसे में आपको इंग्लिश बोलने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है. तो आज का जो हमारा एजेंडा है, या फिर आज का ये जो लेसन है, उन लोगों के लिए है जो इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस करना चाहते हैं. हम पिछले 4-5 दिनों से स्टेप बाय स्टेप एक्शन प्लान लेके प्लानिंग से ब्रेन को इंग्लिश में इवॉल्व और एग्जिस्ट करने के लिए प्रोग्राम कर रहे हैं. सो आज का जो है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डे है. अगर आपने इससे पहले के डेज को अगर नहीं देखा है, तो आई हाईली रिकमेंड यू कि आप एक बार उस कॉन्टेक्स्ट को समझें. क्योंकि अगर कॉन्टेक्स्ट को अगर आप समझोगे नहीं, तो आपका ब्रेन प्रोसेस नहीं करेगा. क्योंकि ये ई स्वयं इंग्लिश स्पीकिंग सिस्टम जो है ना, वो बाकी सारे यूट्यूब टीचर, ट्रेनर या फिर ट्रेडिशनल स्कूलिंग सिस्टम जो है, वो इससे बहुत 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 डिफरेंट है. इसमें मैं आपको कोई रैंडम प्लेन इंफॉर्मेशन जैसे कोई सेंटेंसेस लिखकर हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन करने के लिए नहीं कह रहा हूं. क्योंकि आपका जो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम ही तो ट्रांसलेशन है. ट्रांसलेशन की वजह से ही तो आपको इंग्लिश नहीं आ रही है. अगर अभी ट्रांसलेशन रोकना है, तो इसके लिए मैं अगर आपको ट्रांसलेटेड वोकैबुलरी वर्ड्स या फिर ट्रांसलेटेड सेंटेंसेस ही पूछूंगा, कमेंट में पूछूंगा कि आप ऐसा करो, इसका क्या होगा मीनिंग, आप मुझे लिखकर बताइए, ऐसे काम नहीं होगा ना. ठीक है. तो इसके लिए आपको इंग्लिश ही सुनना होगा. ऑलराइट, आप लोगों को आवाज आ रही है? ठीक है, चलिए. तो अगर आपको आपका ब्रेन इंग्लिश में इवॉल्व और एग्जिस्ट करना है, तो उसके लिए आपको इंग्लिश उतनी सुननी पड़ेगी. इंग्लिश सुनने के बाद वो रियल ऑथेंटिक स्पोकन इंग्लिश आपको बोलनी भी पड़ेगी. राइट. और ये होगा कैसे? ये होगा आज की इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस से. राइट. सो आज के लेसन की तरफ चलते हैं. आज का जो हमारा एजेंडा है, वही द ब्लाइंड लव स्टोरी को हम एक बार रिपीट करते हैं. आगे चलने से पहले, आर यू फीलिंग एक्साइटेड? आर यू फीलिंग एनर्जी? क्या आप इंटरेस्ट से इस क्लास को अटेंड कर रहे हो? क्या ये आपके लिए मतलब एक एक होप है कि हाँ भाई, ग्रामर स्टडी करने की जरूरत नहीं? क्या आपकी बॉडी पॉजिटिव और एनर्जेटिक है? अगर बॉडी पॉजिटिव नहीं है, तो लेट्स गेट सम एनर्जी. राइट. चलिए, अपने हाथों को और अपने पैरों को थोड़ा सा लूज करिए. आप जहां पर भी बैठे हो, ठीक है, लूज करिएगा. फील करिए. इनको एकदम ढीला छोड़ दीजिए. आंखें बंद करिए. ठीक है. अब धीरे धीरे फील करिए कि आप एक बड़ी सी पहाड़ी पर आप जा रहे हो. डूबता हुआ सूरज आप देख रहे हो. आप चोटी पर पहुंच गए, जहां पर ठंडी हवाएं आप फील कर रहे हो, महसूस कर रहे हो. जहां पर आपको दुनिया की किसी भी प्रॉब्लम के बारे में, आपके किसी भी प्रॉब्लम के बारे में आपको कोई फिक्र नहीं है. आपकी बॉडी पॉजिटिव है. आप एनर्जेटिक फील कर रहे हो. आंखें बंद रखिए.
अज्यूम करो कि आपकी पूरी जो नेगेटिविटी है वो यहां से चली जा रही है, आपकी प्रॉब्लम्स धीरे धीरे दूर हो रहे हैं। इंग्लिश बोलने के लिए आपको जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे थे वो धीरे धीरे दूर हो जाएंगे। ग्रामर, ट्रांसलेशन, अंडरस्टैंडिंग, प्रोनाउंसिएशन, कॉन्फिडेंस, थिंकिंग इंग्लिश, वोकैबुलरी, इन सारे प्रॉब्लम्स को आप अपने ब्रेन से बाहर निकाल रहे हैं और एक नई ऊर्जा के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ आप तैयार हो। अब अपनी आंखें खोलिए, शोल्डर्स अप, लुक अप, स्माइल करिएगा। इवन आपकी बॉडी कितनी भी टायर्ड क्यों ना हो, जस्ट स्माइल करिएगा, एक फेक स्माइल क्यों ना हो। ऑलराइट, सो आर यू फीलिंग एक्साइटेड नाउ? चलिए, तो let me tell you the story first. I'm going to teach you, I'm going to ask you the questions on the story. All right, so here we go. There was a blind girl. Her name was Alia. I'm just telling you story to get the visualization perfectly and correctly, because आज जो क्वेश्चंस पूछेंगे ना, आज जो क्वेश्चंस मैं आपको पूछने वाला हूँ, इसमें मैं आपको ज्यादा टाइम नहीं देने वाला। I want you to answer it very quickly. All right, so there was a blind girl. Her name was Alia. She hated everything and everyone except her loving boyfriend Sid. No matter what, he was always there for her. One day, they met each other at the Hanging Garden in Mumbai. They sat under the big tamarind tree. Alia held his hand firmly and she said, "If I could see the world, I would marry you, Sid." And then Sid replied, "I promise you, one day you would see this beautiful world." One day, someone donated a pair of eyes to Alia. In operation, her sight was restored. The first thing she saw after the operation was her boyfriend. She was shocked and surprised when she saw her boyfriend. Her boyfriend asked, "Now you can see this beautiful world, my sweetheart. Would you marry me now?" And she refused to marry him. She said, "No, I will not marry you. You are blind. How could I marry you?" He was rejected. He was crying. He cried and he walked away in tears. 3 days later, he wrote a letter. 3 days later, he wrote a letter to Alia. And the letter said, "Just take care of my eyes. Don't cry. I'm with you always." So the moral of the story, human brain gets changed when our circumstances and our situations or our status gets changed. Right? So, are you ready? I'm gonna ask you some icebreaker questions about the blind love story. So, are you ready? Just let me know in the chat box. Are you ready? Someone business gan. Yes. Okay. So, are you ready? Just type yes. No matter what, no matter where you are, I want you to speak. अगर आप बस में, ट्रेन में, कहीं चल रहे हो या फिर घर में अकेले हो, just shout your answer today. Just speak up. इंग्लिश बोलने के लिए सुनना है and then you have to respond. You have to reply. यही
तालीम आपकी होनी चाहिए. And this is how we learn. All right? So here we go. What was Alia's condition? What was Alia's condition? Now today I'm not going to give you answers. All right? You have to speak according the information you have. What was Alia's condition? She was blind, right? Why did Alia hate herself? That's right, because she was blind. She was blind. Next question. Who did Alia love despite everything? Who did she love most? She loved her boyfriend, right? She loved her boyfriend. Next question. Where did Alia and Sid met each other? Where did they meet? They met each other at the Hanging Garden in Mumbai. Try to respond quickly. What kind of a tree did they sit under the Hanging Garden? What kind of a tree? It was a tamarind tree. All right? Now, अगर आप लोगों को क्वेश्चंस नहीं भी दिख रहे हैं तो कोई चिंता की बात नहीं है. जस्ट लिसन. मैंने आपको सेकंड रूल बताया था. लर्न विथ योर ईयर्स, नॉट विथ योर आईज. आपको पढ़कर आंसर देने की कोशिश नहीं करनी है. यू हैव टू लिसन एंड यू हैव टू रिस्पॉन्ड. Right? So, what kind of a tree did they sit under? It was a tamarind tree. Next question. How did Alia express her love to Sid? How did she express? By holding his hand firmly, right? She held his hand firmly. Next question. What did Alia wish for? What was her wish? Her wish was to see the beautiful world, right? Her wish was to see the beautiful world. Next question. What did Sid promise her? What did he promise? Did he promise that they will watch a movie? No. Did he promise that he will give her an engagement ring? No. Then he promised that one day you will see this beautiful world. Next question. Who donated eyes to Alia? Who? That's right. Sid, her loving boyfriend, donated eyes to Alia. What was the first thing? What was the first thing Alia saw after the operation? What was the first thing? She saw her boyfriend first. Right? Okay. Now I'm going to ask you the questions about Sid. Okay? How did Sid support Alia? How did he support? No matter what, he was always there for her. Who was always there for her? Sid. Sid was always there for her. Was he there for her in just few situations? No. He was there for her in every situation, no matter what. Right? Next question. What was Sid's response when Alia wished to see the world? What was his response? How did he respond? He responded with a promise,
with a strong promise. He promised that one day you will see this beautiful world. Right? Yes. Next question. How did Sid feel when Alia refused to marry him? Come on, think and speak up. How did he feel? He was heartbroken. Try to speak anything. All right? You have to think that you are Sid. Feel his pain. सोचो कि उस पर क्या बीती होगी. ब्रेन के जो तार है ना थोड़े से जुड़ने दो. Speak up. All right? So, how did Sid feel when Alia refused to marry him? He cried a lot. His heart was melted. Right? Next question. What did Sid do after Alia refused to marry him? What did he do? He cried a lot. He cried a lot. And he walked away. All right? Did he run away? No, he walked away in tears. What was the content of the Sid's letter to Alia? In other words, what did he write? What was letter saying? That's right. The letter said, just take care of my eyes. Just take care of my eyes. All right. Next question. Why? Why did Sid walk away in tears? Why? That's right. Because he was refused by Alia. He was refused by Alia. Now, I'm going to ask you questions about the story event. स्टोरी का जो इवेंट है ना थोड़ा सा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव आपको लेना है. ठीक है? So, here is the first question. Where is the hanging garden located? Where is? Speak in the present tense. Where is the hanging garden located? The hanging garden is located in Mumbai. All right? Hanging garden is located in Mumbai. Next question. Why? Why did Alia hold Sid's hand firmly? Why? Did she love him? Oh, well, yes, that's right. Alia loved him. That's why she held his hand firmly. Who hold whose hand? Who hold whose hand? Did Sid hold his girlfriend's hand? Oh, well, yes, that's right too. Right? Of course, he also held his girlfriend's hand very tightly and firmly. Right. And why did they held? Why did they hold? Okay. Why did they hold each other's hand? Because they loved each other. Right? Next question. What was Alia's reaction when she saw Sid after the operation? What was her reaction? What was her reaction? Was she shocked or was she surprised? Was she happy or was she sad? She was shocked and surprised. Why? Why was she shocked? Because she saw her boyfriend
is blind, right? All right. So, how did the donation of eyes change Alia's life? How did the donation of eyes change Alia's life? How was her life changed? Was she able to see the world now? Was she able to see the world after operation? Was she happy after the operation? Yes, that's right. Her life was changed. She was able to see the world and she was very happy. Even though she was shocked and surprised, but inner, she felt happiness. Next question. What did Alia's refusal to marry Sid indicate about her feeling? Now, this is the question. Analyze it, understand it, right? What did Alia's refusal to marry Sid indicate about her feeling? Her feeling, उसकी फीलिंग क्या थी जब उसने रिजेक्ट किया होगा तो उसकी फीलिंग क्या थी राइट शी फेल्ट डिसगस्टेड और शी फेल्ट एम्बैरेस्ड शी वाज शॉक्ड एंड सरप्राइज्ड व्हाई बिकॉज she saw her boyfriend was blind and that makes her little uneasy, right? She don't want to marry him at that time. Next question. What was the moral or the moral of the story? What was the moral of the story? Moral of the story was human mind, human brain changes when their situation, circumstances, and perspectives and priorities gets changed. It's a normal and subtle, it's an universal truth. All right? So you have to write it down. मैंने आपको कहा था कि पहले दिन आपको नोटबुक करनी है या फिर जो वर्कबुक मैंने आपको दी थी वो आपने फॉलो करनी है तो अगर आप वर्कबुक को फॉलो कर रहे हो ठीक है अगर आप उस वर्कबुक को फॉलो कर रहे हैं अगर वो वर्कबुक नहीं है आपके पास तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप की या फिर टेलीग्राम ग्रुप की दोनों में आप किसी में भी ज्वाइन हो जाइए ये पीपीटी जो है वो आपको वहां पर मिल जाएगी और इसके क्वेश्चंस जो है वो आपने लिखने हैं ऑलराइट लिसनिंग इज द प्रायोरिटी एंड देन जो आंसर्स है आपके ब्रेन के थ्रू प्रोसेस होके आने चाहिए ठीक है तो ये आपने करने हैं ऑलराइट आर यू एंजॉयिंग दिस आर यू एंजॉयिंग दिस डू यू लाइक दिस मेथड do you want me to teach this way come on write down in the chat box अगर जितने भी लोग देख रहे हैं एक या दो जितने भी हैं अगर आपको ये मेथड पसंद आ रही है तो टाइप यस इन द कमेंट type yes in the comment and then we'll move further all right let me just check okay write down yes in the comment if you want to move further right okay so what was the moral of the story the moral or the moral of the story is human brain changes
when our circumstances, our priorities gets changed. हमारा दिमाग जो है ना वो चेंज हो जाता है जब हमारी प्रायोरिटी चेंज हो जाती है, जब सिचुएशन हमारे अंडर होती है, तो उस सिचुएशन का हम फायदा उठाने के लिए आगे पीछे नहीं देखते, चाहे उसके लिए सामने वाले इंसान की जान क्यों ना चली जाए। एक्सट्रीम केसेस में होता है, राइट। एक्सट्रीम केसेस में हमारा ब्रेन इस तरीके से सोचता है, क्योंकि हमारे ब्रेन का सिर्फ एक ही तो उसूल है, इस बॉडी को जिंदा रखना, राइट। राइट, सो यस, दो तीन लोगों ने कहा है यस 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 यस, ऑलराइट। सो चलिए आगे चलते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू आस्क यू द क्वेश्चंस अबाउट फीलिंग्स and reactions. Okay, you have to feel, you have to feel the reaction, you have to analyze, and then you have to speak. Don't worry, अगर आपसे गलती भी होती है तो डोंट वरी, ठीक है। आप अभी अकेले में हो, अगर आपसे गलती भी हुई तो मैं 3-4 बार तो क्वेश्चन रिपीट ही कर रहा हूं ना, राइट। हर एक वर्ड हमने कम से कम 30-35 बार आपके कानों से अंदर जाएगा और प्रोसेस होकर आएगा। इसी मैकेनिज्म के लिए तो हम ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। यही इंग्लिश माइंड ट्रेनिंग है। सो ट्रस्ट द प्रोसेस, ओके, एंड फॉलो द इंस्ट्रक्शन, ओके। So the next question is, how do you think Sid felt after Alia refused to marry him? How do you think? आपको क्या लगता है सिड को क्या लगा होगा? What do you think? This is a brainstorming question. What do you think? Was he happy? Was he heartbroken? Was he sad? Was he devastated? Did he feel a guilt? Did he feel a guilt about his sacrifice? Right? So all these things you have to mention, you have to write, okay, and then speak up. Either you can just speak up for this time now, and then later on you can write it down. Next question. What might have Alia felt when she realized Sid was blind too? What might she have felt? आलिया को कैसा लगा होगा जब उसने देखा कि उसका बॉयफ्रेंड अंधा है? What might she have felt? She would have been felt about her status, right? She would have been felt disgusting, or she didn't like it. She don't wanted, she did not want to spend her lifetime with the blind person. She thought about it, right? She had thought about it, and then she refused instantly. Next question. Why do you think that Alia refused to marry him? Why? Yes, of course he was blind, but आपको थोड़ा सा डीप सोचना है. Why? Because she would have thought that how could her life be with someone like who can't see, the world? How would he do his daily routine? How would he brush? How would he go to a toilet? Right? These are the basic daily routine things. How would he do? Right? So this might be the reason that's why Alia rejected him. Next question. Now things are getting a little bit deeper. How would you react
if you were in Alia's place, if you were Alia, अगर आप आलिया होते, how would you react? How would have been your reaction? Think about it and then try to speak. अगर आलिया की जगह पर आप होते, ठीक है, आपको अगर डोनेशन में आईज मिलते, आपका बॉयफ्रेंड या फिर गर्लफ्रेंड, आप उनको रिजेक्ट करते हो, या फिर आलिया की जगह पर आप हो, how would you feel? How would you react? How would you respond in that situation? Next question. How would you react if you were in Sid's place? How would you react अगर आप सिड की जगह पर होते, आपकी आईज आपकी होने वाली वाइफ के लिए डोनेट करते हो, and instantly she refused to marry you, how would you feel? आपको कैसा लगेगा? Would you be happy? What would you do? Would you think about suicide? No, don't you ever try to think like that. Okay, look, people will come, people will go, but you have to work for those who stay in your life. लोग आएंगे, लोग जाएंगे, बट जो आपके लिए रुकेंगे ना, वही वैल्यूबल होंगे. Alright, next question. Why do you think Sid gave his eyes to Alia? At least you have to speak at least 2 or 3 sentences. Alright? आपके पहले ums and ahs आएंगे, then eyes आपकी थोड़ी सी ऐसे ऊपर चली जाएगी. That means you are thinking. That means this process, this system is working. अगर आप अभी रैंडमली इस वीडियो पर आए हो, अगर आप सुन रहे हो कि why do you think Sid gave eyes to Alia, आपको अगर प्री कंसीव्ड नॉलेज ही नहीं है स्टोरी के बारे में, तो आप क्या बोलोगे? राइट? सो प्री कंसीव्ड नॉलेज, प्री कंसीव्ड नॉलेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप स्टोरी के साथ इतने इन्वॉल्व हो चुके हो ना, आई प्रॉमिस यू, आई गारंटी यू दैट कि ये सिस्टम छोड़कर आप कभी जाओगे नहीं. यू विल लव दिस सिस्टम. राइट? क्योंकि हमने इस पे प्री कंसीव्ड नॉलेज, डिफरेंट पर्सपेक्टिव से इंफॉर्मेशन को रिकॉल करके ब्रेन को इंग्लिश में इवॉल्व और एग्जिस्ट करने के लिए ट्रेन करते हैं. Isn't it powerful method? Isn't it the world's best method? What do you think? Is this the best method you have experienced yet? दुनिया में या भारत में हो या ना हो, चलिए छोड़िए, उसकी कोई बात नहीं. लेकिन what do you think? आपने आज तक ये मेथड इस तरीके से फील आपने कभी किया है क्या? Do you think that this method is working for you? If yes, then try to answer this question. Why do you think Sid gave his eyes to Alia? Because he loved Alia. He promised her, right, that you would see this world one day. Right? Next question. Now, these are some hypothetical questions. ठीक है? Hypothetical question. आपको इनके आंसर्स देने के लिए ट्राई करना है. What would you do if you were blind? आप क्या करते अगर आप ब्लाइंड होते? सोचो ब्लाइंड लोगों का पेन कैसा होता होगा. राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन.
How would you feel if someone you loved was blind? How would you feel if someone you loved was blind? If you are loving someone, okay, and you realize that the person whom you love is a blind person. आपका जो बॉयफ्रेंड है या फिर गर्लफ्रेंड है या फिर जिस रिलेशन में हो, तो आपका जो पार्टनर है वो ब्लाइंड है. How would you feel? How would you feel? How will you think? Experience the feeling. Get emotionally connected to the feeling. And these emotions will help you to remember those words in your brain. मैं हमेशा से कहता हूं कि इमोशंस जो है ना वो बड़े पावरफुल होते हैं. मैंने कई बार कहा है कि हमारा ब्रेन अगर कुछ चीजें दिखेगा, कोई चीज अगर सुनेगा, कहीं पर अगर वीडियो, इमेज या फिर एनिमेशन कहीं दिखेगा, या फिर इमोशनल अगर एक्सपीरियंस होगा कुछ आउट ऑफ द वर्ल्ड लाइक, तो उस इंफॉर्मेशन को हमारा ब्रेन जो है ना वो याद रखता है. दैट्स व्हाट एग्जैक्टली आई वांट यू टू डू. व्हाट वुड यू डू इफ यू रिसीव्ड अ पेयर ऑफ आईज? You were a blind person and someone donated you a pair of eyes. How would you feel? Would this make you a happy person? Would you be smiling? Would you thank them? What would you do? Next question. How would you feel if you could suddenly see the world? Assume that you were blind, someone donated you the eyes, and now you could see the world. How would you feel? Your answer would be like, oh yes, I will be happy and I'll do everything who have donated eyes to me. Right? So, next question. What would you say to Sid if you were Alia? What would you say to Sid if you were Alia? अगर आप आलिया होते एग्जैक्टली वो मोमेंट में जब उसने आईज डोनेट की, तो उसके बाद आप सिड को क्या बोलते? थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रॉमिस. यू kept your promise. I love you. And you would investigate who have donated the eyes. Right? Next question. Now this is interesting question. How would you handle a situation where someone you love rejects you? How would you handle the situation? In future, you might or you will face this situation where your loved one will reject you. How will you handle the situation? Program your brain right away. Would you try to convince them? Would you try to win them back? What would your reaction? Just be prepared. How would you handle the situation where someone you love rejects you? Next question. Now these questions are about morals and values. Okay? High valuable men are really very powerful in the world. जो हाई वैल्यू जो इंसान होते हैं ना, उनकी मतलब उनका ऑरा अलग ही होता है. सो ट्राई टू बी हाई वैल्यूबल मैन. जैसे इंसानों की, हमारी मर्दों की जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है ना, तो वैसे वैसे उनमें वैल्यूज आती जाती है, वैल्यूज ऐड होती जाती है. दैट्स व्हाई एक्सपीरियंस इज इंपॉर्टेंट.
वो जो बोलते हैं ना कि हाँ एक्सपीरियंस, वो एक्सपीरियंस यानी वो वैल्यू होती है किसी भी चीज को लॉजिकली जज करना, राइट? सो नेक्स्ट क्वेश्चन, what lesson did you learn from the story? I think this would be very simple. The lesson from the story is simply our brain gets very easily changed when the situations, priorities, responsibilities changes. Like this, our brain changes like this, right? Do you agree with the moral of the story? Do you agree? Yes, no, whatever your answer, I don't mind. If you say yes, then why? Why do you agree? If not, then why? Write down your answer, right? I think probably most people will say yes, but I want you to give another answer too. I don't agree with the moral of the story. And why? Yes, write down your answer. Now, next question. How important is loyalty in a relation? Loyalty कितनी important है relation में? Now, this generation is, I mean, this generation is not loyal. ठीक है, ऐसा कहना भी मतलब गलत हो सकता है, किसी को आप दूर से जज भी नहीं कर सकते हो, बट जिस तरीके का ये जो मोबाइल जनरेशन जो है ना, अर्ली स्टेजेस में जिनको मोबाइल मिले हैं, या फिर ये जो आजकल के जो जंजी जो बच्चे हैं ना, उनको अल्गोरिदम कंट्रोल कर रहा है उनकी लाइफ को. इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड मोबाइल, ऑल दिस थिंग्स आर कंट्रोलिंग द लाइफ. और उनकी जिंदगी, इसके बाद की लाइफ की जिंदगी जो है ना, वो मैक्सिमम टाइम जो है वो सिर्फ और सिर्फ मोबाइल पर जाने वाला है. इट्स अ डर्टी ट्रूथ. आपको पता है चाइना ने टिकटॉक बनाया था, राइट? अभी इंडिया में तो फिलहाल बैन है, लेकिन चाइना का जो अल्गोरिदम है टिकटॉक का, वो चाइनीज लोगों के लिए अच्छी अच्छी चीजें प्रमोट करता था. एजुकेशन, स्पोर्ट्स, मोरल वैल्यूज, ये सारी चीजें जो है ना वो प्रमोट करता था उनका अल्गोरिदम. इंस्टाग्राम का भी अल्गोरिदम देखिए आप, यूएस, यूके, इन दोनों देशों के लिए ना उनका अल्गोरिदम अलग से काम करता है. उनका अल्गोरिदम जो है ना वो एजुकेटेड कंटेंट प्रोवाइड करता है, आई मीन उसको प्रमोट करता है ज्यादा. इंडिया का जो अल्गोरिदम है ना इंडियन के लिए, वो सिंपली, कम ऑन, इंस्टाग्राम पर क्या देखना चाहते हैं? बस वही लड़कियों के तो वीडियो देख रहे हैं, राइट? दिमाग से यूजलेस बना रहा है. ये जो अल्गोरिदम है ना, ये इनको लूप में ही फंसा रहा है. बात को समझो. सो दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. आई मीन मुझे नहीं लगता कि ठीक है, चलिए, जिसको जिसको जिंदगी में कुछ करना है, जिसका वो इनर डिजायर जागेगी ना, उसको समझ में आएगी. जिनको नहीं है तो वो तो बस खैर, उनको तो वो समझेगा भी नहीं कि उनकी लाइफ या फिर उनका टाइम कैसे चल रहा है. ओके, ऑलराइट. सो coming back to the question, how important is loyalty in a relationship? Do you think loyalty is important? Well, of course. How important? You should trust your partner. How does physical appearance affect the relationship? Do you think that physical appearance affect the relationship? In some degree, I would say yes. Physical appearance जो है वो मायने रखता है in at some degree. All right. Next question. What does the story teach you about gratitude? स्टोरी आपको ग्रेटिट्यूड के बारे में क्या समझाती है?
जस्ट अ मिनट. मम्मी का फोन है, काट नहीं सकते. ऑलराइट, मम्मी को मैंने मैसेज कर दिया है. ओके. What does the story teach you about gratitude? Gratitude means doing good things for other people. Right? अगर आप किसी इंसान के लिए अच्छे काम कर रहे हैं उनको बताए बगैर, that's a gratitude. All right? So that's a gratitude. Next question. How does the story highlight the importance of sacrifice? स्टोरी में जो इंपॉर्टेंस ऑफ सैक्रिफाइस को पोर्ट्रे किया है वो किस तरीके से किया है. We have to write it down. The person who had loved his girlfriend, he donated his both eyes to. He would have been donated one eye also, but he refused. He did not. He gave his both eyes, two eyes to her. राइट. पॉसिबल हो सकता था ना कि उसने एक आंख अपनी गर्लफ्रेंड को दी और एक खुद को रख ली. राइट. बट नहीं, उसने दोनों भी जो आईज है उसको दी. लव जो है ना वो सैक्रिफाइस का मतलब है. त्याग ही प्रेम का, क्या कहते हैं, आई डोंट नो द कोट, बट वो एक्सटेंडेड कोट सैक्रिफाइस को ही को रिलेट करेगा. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन. हैव यू फेल्ट अनग्रेटफुल फॉर समथिंग इन योर लाइफ? पर्सनल रिफ्लेक्शन क्वेश्चन है. इसका आंसर आप दोगे, कितने पॉजिटिवली दोगे, कितने नेगेटिवली दोगे, तो इस पर आपका पर्सनालिटी जो है ना वो रिफ्लेक्ट होती है. सो डू नॉट स्किप दीज क्वेश्चंस. हैव यू एवर फेल्ट अनग्रेटफुल फॉर समथिंग इन योर लाइफ? क्या आपको आपकी लाइफ में कभी ऐसा अनग्रेटफुल लगा कि यार शायद ये भगवान ने मेरे साथ ये नहीं करना चाहिए था? कभी कोई चीज ऐसी लगी कि यार शायद मेरी नाक अगर सीधी होती, मैं शायद थोड़ा सा गोरा होता या गोरी होती. राइट. मेरे मेरे हेयर्स थोड़े से अच्छे होते या फिर शेव थोड़ी सी अच्छी होती. राइट. सो आपको कभी ऐसा लगा है? हैव यू एवर फेल्ट अनग्रेटफुल फॉर समथिंग इन योर लाइफ? नेक्स्ट क्वेश्चन. हैव यू एवर मेड अ प्रॉमिस टू समवन? हैव यू एवर मेड प्रॉमिस टू समवन and did you keep it? Did you keep your promise or did you break it? Person to person sentences differ हो जाएंगे, but you have to think. Next question. What is the most important quality you look for in a friend? Richness, good looking? What do you look in a friendship? What do you think? What is the most important quality in a friend? Loyalty, right? कभी कभी अगर टाइम आ जाए ना तो बाप के जेब से पैसे निकाल के अपने लिए वो हेल्प करे. ऐसे दोस्त मिलते नहीं है. और जिनके पास है ना वो उनको उनकी कदर भी नहीं होती है. राइट. सबको चाहिए वैसे दोस्त, लेकिन आप भी वैसे दोस्त उनके लिए बनो. पहल आपको करनी होगी. अगर आप किसी को चाहोगे तो ही वो आपके लिए कुछ करेगा. रास्ता जो है वो एक तरफा नहीं होता है, दोनों तरफ से होता है. राइट. तो आपको सीढ़ तो लगाना पड़ेगा, पहले सीडिंग करनी पड़ेगी प्यार की, मोहब्बत की, दोस्ती की, हेल्पिंग नेचर की. राइट. उसमें कोई मीन या फिर मतलबी जो नेचर होगा ना वो बरबट नहीं होनी चाहिए. बेझिझक समर्पण, संपूर्ण समर्पण, वो एक फ्रेंड के लिए भी और ओवरऑल रिलेशनशिप के लिए भी.
मुझे लगता है कि फ्रेंड के लिए ज़्यादा नहीं भी सोचा तो ठीक है, इट्स ऑल राइट, बट रिलेशनशिप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिलेशनशिप जो है ना वो आपको, देखो, माँ बाप का रिलेशन जो है ना वो बहुत पावरफुल और स्ट्रांग होता है, बट हस्बैंड एंड वाइफ का जो रिलेशन है ना वो सबसे लंबा होता है। वी हैव टू एक्सेप्ट दैट। आपको पूरी जिंदगी लगभग एक दूसरे के साथ रहना होता है, और आप कैसे एक दूसरे के साथ रहते हो इसका इफेक्ट बच्चों पर भी होता है। ऑलराइट, सो what is the most important quality that you look for a friend or in a relation? Next question. How do you handle rejection or disappointment? अगर आपको किसी ने रिजेक्ट किया, जहां पर आपको भ्रम निराश हुआ, डिसअपॉइंट हो गए, आपकी जो चाहते थे वो नहीं मिला या फिर वो नहीं हुआ, how would you handle that situation? How would you handle that rejection? Next question. Have you ever helped someone in need? How did it feel? Have you ever helped someone who was in dire need of help? How did that make you feel? Did you feel proud of yourself when you helped others? Did it make happy? Did you see the smile on the people's face when you helped them? It doesn't matter कि पैसे की हेल्प हो या फिर कुछ आपने कुछ अदर हेल्प कर दी हो, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली आपने किसी के लिए कुछ काम कर दिया. Does that make you happy? Did it make you happy? अगर फ्यूचर में भी अगर आप करोगे, will it make you happy? Think about the situations. Have you been ever helped by the people or by someone? You were in dire need of help. You needed someone to help you. Was there someone to help you? If yes, then how did it feel getting helped by the people? Did you feel that gratefulness? What did you say? Right? Next question. Now, question about future action. Okay. If you could change one thing about your appearance, what would it be? अगर भगवान ने आपको ऐसा चांस दिया कि आप आपकी अपीयरेंस का कोई अगर एक चेंज कर सकते हो तो वो क्या चेंज करोगे आप? Tricky question, right? You have to think about this, like, right? क्योंकि लाइफ में अगर आप सोचोगे नहीं ना तो बस ये जैसे लोग बहते जा रहे हैं ना, बस वैसे ही बहते जाओगे. अगर कुछ चीजों के बारे में सोचोगे, अपने बारे में सोच लिया ना, अपने बारे में अगर आपने जान लिया ना तो दुनिया को कॉन्कर कर सकते हो. अपने मन को जानो. हमारे पुराणों में, ग्रंथों में यही तो लिखा है, और यही तो ई स्वयं का मेन कोर इंजन है. ई स्वयं, स्वयं यानी खुद, सेल्फ, खुद सीखो. एंड देन इंग्लिश, ई ई स्वयं. आई एम नॉट गोइंग टू टीच यू. We have to discover things. You have to program, you have to reprogram your brain. Right? You have to be in that situation where you can reprogram your brain. Feel the connection with these lessons. Feel the connection with Ishwar. Next question.
If you could donate something to help someone, what would you donate? If you could donate something to help someone, आप अगर किसी को कुछ डोनेट कर सकते हो जिससे लोगों की हेल्प हो सकती है, what would you donate? Would you donate money? Doesn't necessarily it has to be your body organs, right? हम मरने के बाद भी हम बॉडी जो है वो डोनेट करते हैं, कर सकते हैं. आईज हो गया या फिर कुछ ब्रेन मैरो का समथिंग कुछ तो भी, राइट, दैट कैन बी डोनेटेड. मनी, क्लोथ्स, राइट, you can donate. Write down, I can donate money. I can donate my energy. Like you know, you can do work for them. You can do work for them, right? I can donate clothes, right? You can make homes. You can help them to make homes. You can feed them, right? Food. Okay, all right. जो भी things है वो आप लिख सकते हैं. Next question. This is interesting. If you could meet Sid, what would you tell him? अगर आप सिड को मिल पाए तो क्या बोलोगे आप? Nobody cares sacrifice in today's world. You donated your own eyes. She even didn't think for a minute about this and she walked away like that. She refused you. Right? Next. What would you do if you saw someone in need of help? What would you do if you saw someone who is in need of help? What would you do? Would you help him or her? Or would you ignore them? Next thing. How would you show gratitude to someone who helped you or helps you? How would you show gratitude? Gratitude means it's a way to feel, or it's a way to saying what you feel about help. Gratitude, right? अगर किसी ने मेरी हेल्प की तो मैं उनसे उनसे कुछ कहूँगा ना, हाँ थैंक यू, मुझे तो लगा कि डायरेक्ट भगवान ही मेरी मदद करने के लिए आ गए, राइट? दोज वर्ड्स and those actions are called gratitude. All right? Gratitude. So, how can you show gratitude to someone who helped you? आप किसी सिचुएशन में ऐसे फंसे हो जहां पर आपको दूसरों की जरूरत है. Someone helped you, and how would you show your gratitude? I would say thank you to them. All right? I'll do work for them. Right? Whatever. Try to inject 2 or 3 sentences. All right? अगर okay, let's say इतने sentences के बाद देखो, दुनिया का सबसे हार्ड काम जो है ना वो दिमाग से सोचना है. सोचना है. 1 घंटा अगर आप दिमाग से काम करते हो या फिर दिमाग से सोचते हो ना, तो वो 8 घंटे बॉडी से काम करने के बराबर है. ऑलराइट? इसीलिए आपको अभी आगे के क्वेश्चंस हम नहीं लेंगे क्योंकि मुझे लगता है कि अगर क्वेश्चंस ज्यादा हो गए ना तो फिर वो ओवरवेलमिंग इंफॉर्मेशन हो जाएगी, वो फिर लेंदी, बोरिंग और फिर वो इंटरेस्ट चला जाएगा. राइट? बाकी के जितने भी क्वेश्चंस हैं मैं इसकी पीडीएफ आपको वर्कशीट में आई मीन व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा. अगर आपको नहीं मिलती है तो आप मुझे कमेंट करिएगा अभी लाइव चैट में भी, या फिर इस वीडियो के बाद आप कमेंट बॉक्स में जाकर आप कमेंट करिए. मैं आपको वो ये जो पीडीएफ है, आई मीन ये जो पीपीटी है, इसकी पीडीएफ आपको शेयर करूंगा और जो वर्कबुक है वो भी शेयर करूंगा, जिसमें आप सारे क्वेश्चंस जो है वो लिख सकते हैं, जिसमें स्टोरीज है, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, ये सारे
तीनों टेंसेस की स्टोरीज हैं और उसके बाद ये सारे क्वेश्चंस भी हैं. ऑलराइट, सो डिड यू एंजॉय द लेसन? ऑलमोस्ट 10 o'clock. चलिए, अभी कल हम इस लेसन सेट का आखिरी हिस्सा देखेंगे जो है ग्रामर स्टोरी. ठीक है, ग्रामर स्टोरी देखेंगे. स्टोरीज को तीन अलग अलग टेंसेस में, वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स, एम, इज, वाज, वेयर, शैल, विल, माइट में कैसे चेंजेस होते हैं, ये कल के लाइव क्लास में देखेंगे. एंड कल का जो लेसन होगा या फिर कल का जो क्लास होगा इस लेसन का आखिरी लेसन होगा. ठीक है, और उसके बाद परसों से हम हार्दिक्स आईपीएल ये लेसन सेट स्टडी करेंगे. मेरा काफी फेवरेट लेसन है और you will love that lesson. All right, so I wish you very all the best. I hope you enjoyed watching the lesson. I hope you try to give answers, and I hope you will stay tuned in this live class. I'll see you soon tomorrow. Till then, bye bye.